हेलो गाइज, मैं सेल्फ दिनेश बारेला एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी टुडे। तो गाइज मैं आज से इस चैनल पर लेके आ रहा हूँ बायोलॉजी एनसीईआरटी की एक नई सीरीज़। उसका नाम है की कॉन्सेप्ट एपिसोड। तो गाइज ये एपिसोड आपको रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीट चैप्टर वन शॉट में यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। आज का पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं अगला चैप्टर जल्द लेके आऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग एटमॉस्फेरिक O2 एक्सचेंजेस फॉर सेलुलर CO2। नेक्स्ट, respiration catabolic breakdown of nutrients for cellular energy. Next, nutrients broken down: glucose, amino acid and fatty acid. Next, respiratory organs across phases. Organisms use different structures based on the habitat and organization level. First, simple diffusions in sponges, coelentrators and flatworm. Next, most cuticle in earthworm and cutaneous type respiration. Next, tracheal tubes in insect like network of air tubules. Next, gills in aquatic arthropods, molluscs and fishes. Lungs in reptiles, birds, mammals and adult amphibians. Next, human respiratory system. The conducting pathway of human respiratory system, starting from first nostrils, entry point above the upper lips, nasal chamber, warm and filter entering airs, pharynx, common passes for food and airs, larynx, cartilaginous sound box for vocalization, epiglottis, elastic flap preventing food entering larynx. Trachea, windpipe extending to mid-thoracic cavity. Fifth thoracic vertebra, point where trachea split into bronchi. Cartilaginous rings, incomplete rings supporting major airways. Alveoli, thin vascularized bag where gas exchanges occur. Structural features: epiglottis, thin elastic cartilaginous flaps preventing food entering the larynx. Incomplete cartilaginous rings support structures for the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles. Pleura, double layered membrane enclosing the lungs with the pleural fluid to reduce friction. Functions of the conducting part: the respiratory tract from the external nostril up to the terminal bronchioles from the conducting part. It performs the three vital functions. First, transport atmospheric air to the alveoli. Next, clears incoming air of foraging particles. Next, humidifies and warm air to body temperature. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है डोर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम। नेक्स्ट, वेंट्रली स्टर्नम होता है एंड ब्रेस्ट बोन होते हैं।
एंड नेक्स्ट लेटरल साइड में क्या होता है, रिब्स होते हैं। लोअर साइड में क्या होते हैं, लोअर साइड में डम शेपेड डायफ्राग्राम्स होता है। 5 स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। फर्स्ट है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड रिलीजिंग CO2 रिच alveolar एयर्स। सेकंड है एट alveolar diffusions, exchange of O2 and CO2 across the alveolar membrane. थर्ड है गैस ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू आउट द बॉडी वाया ब्लड सर्कुलेशन। फोर्थ है टिश्यू डिफ्यूजन, एक्सचेंजेस ऑफ O2 and CO2 between the blood stream and body tissue. फिफ्थ है सेलुलर रिस्पायरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 by the cell for the energy production, catabolic reaction and the releases of CO2. Next, two stages of breathing. First है inspiration, atmospheric air is drawn into the lung. Next है expiration, alveolar air releases out. Role of pressure gradients, air move due to pressure differences. Next, pressure differences exist between lungs and atmosphere. Next है inspiration, lower pressure inside the lung, and this is create negative intrapulmonary pressure. Expiration, higher pressure inside the lung. Internal pressure exceeds atmospheric pressure. Key muscle involved. First, diaphragms, muscle at the base of chest. Next, intercostals, muscle located between ribs. Next, internal intercostal muscle on the outside layer. Next, internal intercostal muscle on the inside layer. Mechanism of inspiration, inhalation. Inhaling. First, volume increases, the thoracic cavity expands. Next, pressure drops, intrapulmonary pressure falls below the atmospheric pressure. Next, air flow in external air rushes into lung. Next, mechanism of expiration, exhalations. First है muscle relaxes, diaphragm and intercostal muscle return to the normal position. Next है volume decreases, thoracic and pulmonary volume reduces. Next है pressure rises, intrapulmonary pressure exceeds and atmospheric pressure. Next, air flow out, lung expel the air. Key breathing fact, abdominal muscles, this increases breathing strength. Normal rate, healthy human breathe 12 to 16 times per minute. Next, measurement tools, a spirometer estimated air volume during the movement. The very important points, tidal volume, definition, volume of air inspired or expired during the normal respiration per breath approximately 500 ml and per minute approximately 6000 to 8000 ml of air for healthy men. इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम यानी कि IRV डेफिनेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सिबल इंस्पायरेशन, एवरेज 2500 ml to 3000 ml. एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम यानी कि ERV डेफिनेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर
a person can expire by the forcible expiration, average 1000 ml to 1100 ml. नेक्स्ट रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि RV, एयर रिमेनिंग आफ्टर फोर्सेड एक्सपायरेशन, एंड एवरेज 1200 ml to 1200 ml. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि IC, द टोटल एयर इंस्पायरेड आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, फॉर्मूला TV प्लस IRV. नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC, टोटल एयर एक्सपायरेड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, फॉर्मूला TV प्लस ERV. नेक्स्ट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, एयर रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, फॉर्मूला ERV प्लस RV. विटल कैपेसिटी VC, द मैक्सिमम एयर ब्रीथेड आफ्टर द फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फॉर्मूला ERV प्लस TV प्लस IRV. टोटल लंग कैपेसिटी TLC, total air accommodated after forced inspiration, formula RV plus ERV plus TV plus IRV. Alternative formula है VC plus RV. Primary site, the alveoli are the primary site where exchange of gases take place. Gases exchange also happened between the blood and tissues. Mechanism, transport occur via simple diffusion derived primarily by the pressure or concentration gradient. Infusing factor, the rate of diffusion is determined by the gaseous solubility and thickness of the respiratory diffusion membrane. Parietal pressure, PO2 and PCO2, the pressure exerted by the individual gas within a mixture. Gas always diffuse from the area of higher parietal parietal pressure to the lower parietal pressures. Partial pressure. Sorry. Summary of the partial pressure in mmHg. The table outline how gradient derive O2 into the body and force CO2 out. Respiratory gases, oxygen in atmospheric air 159 and alveoli oxygen 104 and blood deoxygenated में जो ऑक्सीजन होता है वो 40% होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक एयर 0.3 एंड अल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड 40% होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. Three layer of diffusion membrane. First layer squamous epithelium, the one cell thick outer wall of the alveolar cavity. Next है endothelium, the single layer cellular lining of the surrounding blood capillary. Next layer है basement substance, the thin supportive matrix sandwiched directly between the epithelium and endothelium. Key functional inherent thickness, the total thickness of the three layers combined much less than 1 mm, minimized diffuse distance. Solubility of CO2 20 to 25 times more soluble than O2, allowing the diffuse rapidly across this membrane, even lower partial pressure gradient. Direction, air enter the alveolar cavity and sending O2 into the red blood cell, while CO2 exit the blood capillary into the alveolus to the exhalate. Transfer of oxygen यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन इज कैरिड थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम इनटू द डिस्टिंक्ट वेज. रेड ब्लड सेल RBC transferred 97% of the oxygen bound reversely
to hemoglobin as a oxyhemoglobin. Blood plasma transport remaining 3% dissolved directly in the liquid stage. Capacity: each individual hemoglobin molecule can be bind up to the maximum 4 oxygen molecules. The oxygen dissociation curves plotting percentage saturation of hemoglobin against the partial pressure of oxygen PO2 held as the characteristic sigmoid S-shaped curve. In the alveoli lungs, high PO2 and low PCO2 and low H plus concentration and lower temperature completely favor formation of oxyhemoglobin. In tissues, low PO2 and high PCO2 and high H plus concentration and higher temperature completely favor dissociation releases of oxygen from the hemoglobin. Next, delivery efficiency: every 100 ml of oxygenated blood deliver approximately 5 ml of O2 to body. Transfer of carbon dioxide, CO2. Carbon dioxide is generated by the metabolic activity in the tissues and transported back to the lungs via 3 pathways. First pathway, bicarbonate ion SCO3 transferred the vast majority 70% of the carbon dioxide. Next है कार्बोनोहीमोग्लोबिन transfer of 20 to 25% of bounded directly to amine groups of hemoglobin. Delivery dissolved plasma transfer of the remaining 7% dissolved directly in blood plasma. Chemical reaction: the enzyme accelerated the reversible reaction in RBC and plasma. CO2 plus H2O and H2CO3 carbonic acid and SCO3 plus H plus bicarbonate plus hydrogen ions. Transport of mechanism: at tissues, high PCO2 and CO2 diffuse into blood. Reaction goes forward bicarbonate from. At the alveoli, low PCO2 reaction gases backward. Bicarbonate turn back to CO2. Gas exhalate. Key efficiency fact: 4 ml of CO2 is delivered to alveoli by the every 100 ml of deoxygenated blood. Regulation of respiration: the neural system regulated respiratory rhythm to meet body tissue and demand throughout specific brain center and the chemical receptor. The respiratory rhythm center located in the medulla oblongata and primary regulation respiratory rhythms. Phonetic center located in the phones regions moderate the function of the rhythm center, reduce the inspiration duration to the alert respiration rate. Chemosensitive area located adjacent to the rhythm center, highly sensitive CO2 and hydrogen. Hydrogen ion activated the rhythm center to eliminate the substance when level rise. Peripheral receptor located in the aortic arch and the carotid artery detected change in the CO2 and H plus concentration, send remedial signal to the rhythm center. Role of oxygen: quite significant regulation of respiratory rhythms. Disorder of respiratory system: first है asthma, difficulty in breathing causing wheezing triggered by the inflammation of bronchi and bronchioles. Next है emphysema, chronic disorder damaging alveoli walls and decreasing the
available respiratory surface area and primary caused by the cigarette smoking। और थर्ड वाला जो होता है वो कौन सा है तो है, एंड लास्ट वाला डिसऑर्डर होता है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग ग्रेडिंग और स्टोन ब्रेकिंग कंपनीज में ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वालों के लोगों में होता है। जैसे कि उनके जो लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, पोरिफिकेशन ऑफ फाइब्रोस टिश्यू एंड कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज एंड वर्कर्स सच एस इंडस्ट्रीज शुड बी वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। तो ओके गाइस, thank you for watching this video।